So, welcome to the fourth class of straight line. We are doing PYQs, concepts, and sare shortcuts because you all know CET is all about speed, precision, and shortcuts. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सॉल्व किए. अगर आप नए हो तो आई वुड सजेस्ट गो एंड प्लेलिस्ट में से लेक्चर नंबर 1 and 2 पहले देखो एंड देन कम इन द सीक्वेंस. डू नॉट जंप ऑन द क्लास डायरेक्टली. ऑल्सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि सिट विथ अ नोटबुक एंड अ पेन. जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन जब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट प्लीज पॉज द वीडियो, watch the question, try to solve it on your own, then watch the solution from my side. All right, so let's begin. I will share the video, share the screen first. Let me share the screen. So this was the last question that we solved. Okay, let's go to the next question, number 13. It says that if the line joining 2 points A and B is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle 15 degree, then the equation of line in the new position is very interesting question. Okay, let's नाउ ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना लेट्स मतलब कॉन्सेप्चुअली अपने को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है. Okay, now what I have observed in the last class, that logo was hindering the question. Let me do this. Okay, now let me draw a y-axis. This is x-axis. Now let us draw a line. Okay, first of all, okay, so let me check A and B, दो lines points दिए and the line passing through A and B. First क्या होगा ये, मतलब A is 2,0, right? This is A is 2,0, so this is my A, which is 2,0. B is 3,1, so this is my, let's say B is 3,1, right? And the line is something like this. The line is something like this. यहाँ पे कुछ लाइन नहीं है अपना. ओके, ना सी ये ना कंफ्यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर सकते हैं. तो मैंने कोशिश किया फर्स्ट आइडेंटिफाई करने का. अच्छा, मुझे पहला डेफिनेशन स्लोप का जो बताया गया था वो tan थीटा था. सो ये थीटा है मेरा, लेट्स से थीटा है. Okay, now that is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So can you observe this is equal to 1, right? तो ये स्लोप 1 है. तो स्लोप 1 कब पॉसिबल है? tan थीटा का वैल्यू 1 है, which means tan theta is equal to 1, which means theta का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है. So let me now write, instead of theta I will write here 45 degree. मेरा ये एंगल जो है 45 डिग्री है. Now the line is rotated about A. Line is rotated about A in the anti-clockwise direction. तो anti-clockwise direction, this direction is clockwise. ये वाला डायरेक्शन जो आएगा ये क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है थ्रू ए. दैट मींस ए को हमने फिक्स रखा है. ओके, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. सो यहां से 15 डिग्री और ऊपर उठा लिया लाइन को इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So what will be the total inclination in this case? The total inclination in this case will be, now it will be equal to 60 degree and the line is passing through A. Now few important things, let us observe few important things. Now the slope is tan 60. न्यू लाइन का स्लोप कितना है? tan 60. और tan 60 का वैल्यू कितना है? √3. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि कौन सा एंगल, कौन सा इक्वेशन इसको मैच कर रहा है. तो यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन इज मैचिंग बिकॉज यहाँ पे दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c, जहाँ पे आपको स्लोप दिख रहा है √3x - 2 √3.
सो माई आंसर इज ऑप्शन बी। अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो आपके पास स्लोप आ गया है एंड इट इज रोटेटेड थ्रू ए, तो मतलब द लाइन इज पासिंग थ्रू ए, दैट इज 2,0. So y minus y1 is equal to m into x minus x1, that is 2. So y का वैल्यू जो हो जाएगा √3x माइनस 2√3. सो ऐसे भी आपको आंसर आ रहा है और डायरेक्ट भी आपको आंसर मिल सकता है. ऑलराइट, so now let's have a look at this question. The slope of line through origin, the line is passing through origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of y axis. Remember अपने को slope के लिए it has to be positive direction of y x axis and not y axis. ओके, तो मैं थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन ड्रॉ करके देखता हूं. नाउ इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, now he says that the line is making an angle of 30 degree with the positive y axis, right, measured in anti clockwise direction. So ये बंदा इसकी बात कर रहा है कि ये कितना है, 30 डिग्री है with the positive y axis. But what we are looking for is this angle. We are looking for this angle. So what will happen now? Have a look at this. So सबसे पहली बात, ये अगर 30 है तो ये भी 30 बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये बनेगा 60. Now if this is 60, लीनियर पेयर है तो दिस एंगल बिकम्स 120. एंड मेरा सवाल ये है स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन इज tan थीटा. तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है 120 है. शायद मुझे 120 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज 180 minus 60. Now tan 180 minus 60, which means I am in the second quadrant. I am in the second quadrant and second quadrant में 180 है तो the ratio remains same, but in the second quadrant only sign is positive, so this becomes minus, and that is minus √3. So my answer becomes option C, that is minus √3. Let's come to the next question. Okay, now this question, the x-intercept of a line passing through the points, दो पॉइंट्स दिए हैं, उसका x-intercept चाहिए. So ideally there are two ways. There is that this can be solved by finding out the equation of a line. Equation of a line, because the 2 points are known, we'll be using 2-point form. 2-point form is y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Okay, now in this case, y minus y1 divided by y2 minus y1, x minus x1, that is half, divided by x2 minus x1. So minus of minus 1 by 2 होता है plus. So here y minus 1 upon 1 बनेगा. Let me to make it easy, राइट हैंड साइड पे ये स्टेप्स देखो, आपको जितना फास्ट करना है उतना कर सकते हो, उतना करना है आपको. सो लेट मी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 2, तो इट बिकम्स 2x, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 होगा. सेम हियर, लेट मी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 2. सो अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. 2 + 1 का वैल्यू होता है 3. सो लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई 3. सो दिस बिकम्स 3y minus 3 is equal to 2x plus 1, and 2x minus 3y is equal to minus 4. अगर मैं -4 से डिवाइड करता हूं तो 2x upon -4 minus 3y upon -4 is equal to 1. We are interested in the x-intercept of the line, which is, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो -2 बनेगा. हेंस द x-intercept is -2. पूरा लाइन का इक्वेशन में हमको इंटरेस्ट नहीं है. ऑलराइट, नाउ फैंटास्टिक प्रॉब्लम. वंस अगेन देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
these are the 2 points, and making an angle of 90 plus alpha with the positive direction of x-axis. This angle is with the positive direction of x-axis. So m का वैल्यू जो है वो tan 90 plus alpha होगा. Okay, the value of m will be 90 plus alpha. All right, now tan 90 plus alpha is minus cot alpha. It is minus cot alpha because we are in the second quadrant. 90 है तो ratio change हो जाएगा. Right now, if I try to find out the equation of the line, what do I have? I have the point, and I have the slope. So I will be using slope point form, which is y minus p sine alpha is equal to m cot alpha है minus cot alpha. I will be writing it as cos alpha upon sin alpha. Cot alpha can be written as cos alpha upon sin alpha, and x minus x1, which is p cos alpha. Let us cross multiply. Sin alpha को cross multiply कर देते हैं. So this becomes y sin alpha minus p sin square alpha is minus x cos alpha plus p cos square alpha. रिमेंबर साइन अल्फा को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो ये जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा. नाउ x cos alpha on the left hand side becomes plus y sin alpha is equal to p cos square alpha as it is, p sin square alpha on the right hand side it becomes plus. Now naturally simple, अभी आपको समझ गया होगा कि क्या करना है. On the right hand side what we are going to do is I'm going to take p common. Inside the bracket it is cos square alpha plus sin square alpha. And what is cos square alpha plus sin square alpha? It is 1. Hence, my answer is x cos alpha plus y sin alpha is p into 1, that is p. Hence, my answer is कौन satisfy कर रहा है? Option C is satisfying the condition. So, option C is my correct option for question number 16. Let's move on to question number 17. Question number 17 is the equation of perpendicular bisector of the line segment joining A and B. उसका perpendicular segment, perpendicular bisector दो चीज़ है, perpendicular and bisector. So दो चीज़ों की ज़रूरत है. Midpoint, bisector मतलब midpoint. मिड पॉइंट क्या होगा इसका? -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2. फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2. दिस विल गिव मी, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे -1, 2, -1. लेट मी चेक इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई एक सॉल्यूशन है क्या. तो डेफिनेटली 2, -1 इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, राइट. यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. सो देयर आर टू इक्वेशंस वेयर इट्स सेटिस्फाइड. देखो 2 -1 becomes 1. यहाँ पे 2 minus of -1 is 3. So it is satisfying B and D. तो मुझे और सॉल्व करना पड़ेगा. Now let me move to the next steps. So, perpendicular bisector means two things: perpendicular and bisector. Bisector मतलब midpoint आ गया. Midpoint, so it is like we have AB. यहाँ पे AB है और उसका एक midpoint से perpendicular draw करेंगे हम. Alright. तो this is my 2, -1. अब मुझे ये AB है, मान लो ये PQ है मेरा, राइट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा PQ है, तो PQ का स्लोप चाहिए. उसके लिए पहले तो मैं स्लोप निकालूंगा AB का. स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ AB y2 - y1,
divided by x2. Minus of minus 2 is plus 2. So that becomes minus 8 upon plus 8, which is equal to minus 1. PQ जो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर है AB को, तो स्लोप ऑफ PQ क्या बनेगा? स्लोप ऑफ PQ होगा निगेटिव रेसिप्रोकल. निगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब परपेंडिकुलर है तो निगेटिव रेसिप्रोकल इज द शॉर्टकट. नाउ निगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब रेसिप्रोकल ले लो, 1 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल इज 1. एंड निगेटिव का मतलब साइन चेंज करना, तो यहाँ पे अगर -1 है तो दिस बिकम्स +1. नाउ ये दोनों में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका स्लोप +1 है? एंड दैट इज दिस इक्वेशन, राइट? और एल्स अगर आपको नहीं समझ रहा है तो यू विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. कैसे करेंगे? अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास स्लोप है और दूसरा मेरे पास पॉइंट है, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m, दैट इज 1 x माइनस x1. अगर मैं ये सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा x माइनस y, राइट, इज इक्वल टू 3. ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, राइट? Try to identify the equations directly. Do not waste the time. Now, the equation of line. The equation of line. Very interesting. Very easy question. Equation of line with slope दिया है, making intercept of 2√2 on the negative direction of y-axis. So, as simple as मेरा equation है, ये अपने पास m दिया है, फिर अपने पास c दिया है, दैट इज द y इंटरसेप्ट. सो दिस बिकम्स y इज -1 अपॉन √2x प्लस c. अब c ही सेज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो हालांकि ये 2√2 बता रहे हैं बट ऑन द निगेटिव y एक्सिस है, so this becomes -2√2. Now the easier way is to multiply the equation by √2. √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस बिकम्स √2y. इसको मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा -x. इसको मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमेंबर ये है 2 और √2 into √2 becomes 2. So 2 into 2 it becomes 4. So the equation is √2y plus x plus 4 equal to 0. And the equation that satisfy, sorry, not this equation, I'm so sorry, not this equation, √2y is this equation, it satisfies. All right. Now, if the line through point -2, 6 is perpendicular and 4, 8 is perpendicular to the line passing through the points. ये बहुत ही आसान सवाल है सबके लिए. दो लाइंस परपेंडिकुलर बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो मैं इसको A कंसीडर करता हूँ, इसको B कंसीडर करता हूँ, इसको C और D, विच मीन्स इन अदर वर्ड्स AB इज परपेंडिकुलर टू CD. तो पहले में ये समझ लो, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ CD is always equal to -1. When the two lines are perpendicular, the product of slopes is -1. राइट. नाउ सर यहाँ पे नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. राइट. नाउ यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी है 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ सी डी है 24 - 12 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to -1. Now 2 upon 6 multiplied by 12 upon x minus 8 is equal to -1. 6 2s are 12. So यहाँ पे 2 into 2 4 बना. x minus 8 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, that becomes -x plus 8. Now x on the left hand side, 4 on the right hand side. So the value of x becomes 4 and that is your final answer. This is question number 19.
Question number 20. The equation of line perpendicular to the line 2x minus 3y plus 5 equal to 0 and making an intercept of 3 with the positive y axis. Very interesting, very simple problem. अगर ये लाइन है गिवन लाइन एंड मुझे अगर चाहिए परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है इज इक्वल टू 0 इज द गिवन लाइन, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बनेगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0. तीन चीजें अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो, थ्री थिंग्स, ए एंड बी इंटरचेंज, second middle sign change, third constant term change. So what about this? अगर 2x plus 3 2x minus 3y plus 5 equal to 0 इसको परपेंडिकुलर लाइन होगा तो ये होगा 3x plus 2y plus k equal to 0. सारे के सारे इक्वेशन स्टार्ट्स हो रहे 3x plus 2y से. Now he says that the y intercept of the axis, it is positive y intercept of 3 with the positive x axis, sorry, positive y axis. So which means y intercept is given to you, so which means 2y is equal to minus 3x minus k, and which means y is equal to minus 3 by 2x and minus k by 2. This is of the form y is equal to mx plus c, which means the y-intercept according to my calculation is minus k by 2. According to their calculation is 3, and k का वैल्यू माइनस के का वैल्यू 6 होता है, देन के का वैल्यू कितना बना मेरा -6. हेंस द इक्वेशन इज 3x. अगर मैं इसको यहाँ पे सीधा लेके आऊँ तो मेरा इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यू कैन चेक, यहाँ पे अगर 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं देन यू विल गेट द आंसर. 0 x के बदले और y के बदले 3, you get this as a answer. All right. Now something different. N 3 comma minus 4 is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line. Then the equation of line L is, so थोड़ा समझ के लेते हैं पहले, because we are coming across this problem for the first time, this kind of problem. So let me draw a line first. सो ये सारा मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मे बी आपको लगेगा कि सर 3 comma minus 4 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. डू नॉट वरी, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट. सो यहाँ पे दिस इज सपोज 3 comma minus 4 है, राइट. नाउ यहाँ से इट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, राइट. नाउ लेट्स से यहाँ पे ये n है, यहाँ पे O है, बट रिमेंबर मुझे अगर ये मान लो A एंड B है, आई वॉन्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. ओके, लेट्स ट्राई हाउ. सो व्हाट इज स्लोप ऑफ ओ एन? फर्स्ट थिंग, स्लोप ऑफ ओ एन. अभी ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप की बात करेंगे. स्लोप ऑफ ओ एन की बात अगर करें तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, which is minus 4 upon 3. So what is slope of AB? AB is perpendicular to ON. AB is perpendicular to ON. तो slope of AB बनेगा negative reciprocal. परपेंडिकुलर है तो निगेटिव रेसिप्रोकल बनेगा. निगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है रेसिप्रोकल ले लो और साइन चेंज करो, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो ये बनेगा प्लस. नाउ माय स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जिसका इक्वेशन मुझे चाहिए, ये 3/4 है. तो इसको सेटिस्फाई करने वाला मेरे सामने एक ही इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज दिस इक्वेशन, राइट. अगर चाहते हो, नहीं समझ में आया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व इट, राइट. तो अगेन स्लोप तक आई होप आपको समझ में आ गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन ए बी. देन लाइन ए बी इज पासिंग थ्रू 3 comma minus 4 एंड हैविंग स्लोप 3/4. अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? y
स्लोप है एंड पॉइंट है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x minus x1, right? So this is your point x1 y1 and this is your slope once again, अगर मुझे AB का इक्वेशन निकालना है। ऑलराइट, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4y प्लस 16 हो गया इज इक्वल टू 3x माइनस 9 एंड द लास्ट स्टेप अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 3x माइनस 4y, सब एक जगह लेके आए, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी वही आंसर मिल रहा है। ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, राइट? सो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप ठीक से इसको समझ सकते हो तो ये स्लोप वाला यही एक इक्वेशन दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। ऑलराइट, let's go to the next question. The equation of a line whose perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle which the perpendicular to the line from the origin makes is 210 degree. Now अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वाला जो क्वेश्चन है और ये थोड़ा बहुत सिमिलर है। ही इज अगेन टॉकिंग अबाउट द from the origin. So let me draw a line again for the understanding purpose. I'm drawing a line. Actually वहाँ पे time waste नहीं करना है आपको, तो this is the line, let's say, okay? और यहाँ पे मुझे एक perpendicular from the origin draw करना है, right? This is the perpendicular from the origin. क्या दिया है? He is saying that this is 5 and this angle is 210. Remember 210, मैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, अदरवाइज यू नो दैट वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ये 210 नहीं दिख रहा है, बट दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो इट मींस हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है, दो चीजें अवेलेबल है, लेकिन दोनों इसके बारे में अवेलेबल है। लेट्स से ये P है मेरा, ये O है, और मुझे इक्वेशन निकालना है AB का, राइट? Now यहाँ पे the data which is available is about the normal, hence we are going to use normal form. And what is the normal form? Normal form is x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. What is alpha? Alpha is the inclination of the normal, inclination of the normal from the with the x-axis, right? From the origin, normal from the origin. What is P? P is the distance of the line from the origin. That means the length of the normal from the origin again. ओके, तो उसके लिए ना मैं पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कॉस अल्फा मतलब क्या है? कॉस अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू 120 है। सो कॉस 120 अगर मुझे नहीं आ रहा है 120, तो आई कैन से इट इज 180 माइनस 60। वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर एंगल है तो रेशियो रिमेन सेम, एंड बिकॉज वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट दिस इज माइनस, हेंस कॉस 120 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू minus half. This is first part. Then I also require sin 120. Sin 120 is again written as sin 180 minus 60. Now sin 180 minus 60 is plus sin 60 because in the second quadrant sin is positive, and that is equal to root 3 upon 2. Now let me solve this question. ये तो हो गया, अपना रफ वर्क कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे P का वैल्यू मुझे बताया गया था, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5. So let me apply the formula. तो x cos alpha, which will be x cos 120 plus y sin alpha, that is 120, is equal to 5. Okay, now यहाँ पे cos 120 का आंसर -1/2x, and here it is root 3 by 2. Y is equal to 5. Let us multiply everything by 2. Everything by 2 is equal to 10, right? So this becomes x minus root 3y is equal to -10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो x plus root 3y is equal to x minus root 3y plus 10 is equal to 0, right? X minus root 3y, x oh I'm really very sorry,
really very sorry, a big mistake from my side. This is not 120, this is a very big mistake from my side. Let me correct the mistake. Cos 210. Cos 210 is cos 180 plus 30, which means we are in the third quadrant, and in the third quadrant cos is negative. So this is cos 30, and that is equal to minus root 3 upon 2. Similarly, sin 210, which is sin 180 plus 30, which is equal to, again in the third quadrant, only tan and cot are positive, so all the ratios are negative. So this is minus half. Now once we have the values, let us solve the equation x cos alpha, that is 210, plus y sin alpha, that is 210, is equal to p. remember p का वैल्यू 5 है, तो x यहाँ पे आएगा माइनस cos 10 का वैल्यू, cos 210 का वैल्यू x माइनस हाफ इज इक्वल टू 5, विच मीन्स अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10. सबको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उठा के लेके जाता हूँ. रूट 3x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0. रूट 3x प्लस वाई प्लस 10 equal to 0. The equation here which satisfies that is root 3x मतलब x root 3. All right, so I will stop here as of now. Let us continue in the problems in the next class, right? I'm going slow right now because I want you to understand this. Remember, दिस इज द चैप्टर वेयर ये आपको आगे लेके जा सकता है, बिकॉज जो कोई नहीं करता है वो अगर हम करें तो हम दूसरों से अलग बन जाएंगे. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर नाउ.